Hi guys, welcome back to my YouTube channel. One of you commented, so here's a video of how to make notes. The first and the foremost step is to read the NCERT thoroughly once, because then only we'll understand the main key concepts and topics which should be mentioned in our notes. So here I am reading my NCERT chapter 1 chemistry. The thing is that I have already completed this chapter properly, but I'm reading it again for revision and to make a quick summary sheet which I'll be revising before my exams. So guys, the next step is to keep separate notebook for each of your subjects. The third step is to skim through the topic, like to understand all the topics and to summarize them in a very short way. I'm using this reference book exam idea for science because these reference book contains a lot of definition in it. You can also refer to Google for that or any other online resources, that doesn't matter कि ये सारी NCERT की डेफिनेशन तो हमें दूसरी बुक्स में मिल जाती है. मेरे पास एक और गाइड बुक है एस चांद, इसमें बहुत डिटेली समराइज़ करके चीज़ें हैं एंड सब चीज़ ना बोल्ड में लिखा हुआ है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि उनको डायरेक्टली नोट कर लेना. Now let's come to the fourth step, which is note taking methods. There are like number of note taking methods, but I use mind maps and flowchart because they are very easy to make. And ये मैंने online बनाई थी just to give an idea, brief idea. मैंने electricity chapter की बनाई हुई है and these are the main topics which I have written. Now let's come to the last step of note making, which is to give a aesthetic touch or a decent touch to your notes so that they can really catch your attention. For that, I use these resources like highlighters, sticker, tabs, sticky notes, colorful pens. That's all. As I've already told you guys कि मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं और मैं एक क्विक समरी नोट बनाने वाली हूँ 1 पेज का, जिसको मैं अपने पीटी एग्ज़ाम से पहले या फिर कोई भी एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जा सकती हूँ. इसमें मैं अपने सारे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रही हूँ, जैसे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड इक्वेशन, ट्रांसिडिटी, ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ें लिख के मैंने अपना एक क्विक समरी नोट बना लिया और ऐसे आप अपने नोट भी बना सकते हो. सो हियर आई एम गोइंग टू शो माई नोट्स ऑफ चैप्टर 1. उसको मैंने ज़्यादा कुछ डिसेंट बनाया नहीं है, बस अपने कलरफुल पेन से लिखा है, प्रैक्टिस की है एंड स्टिकी नोट्स ऐड कर दिए, एक्टिविटीज़ बनाई हैं, डायग्राम्स बनाई हैं एंड जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं उनको डिटेल में लिखा, सारे एक्टिविटीज़ को डिटेल में लिखा एंड आई थिंक यही सब इंपॉर्टेंट होता है. मैंने एक्टिविटीज़ भी बहुत ब्रीफली लिखी है एंड जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने वो भी किए हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.